In our previous class, I had summarized the chapter Gender, Religion, and Caste. And today I'm starting the same chapter along with NCERT. Class 10, this chapter is bit sensitive, and of course it requires lots of understanding. That is why I would like that when you are reading this chapter, go through the concepts clearly. मतलब आप बार बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो you will be able to understand. You will be having a very direct questions in your boards. Means we have three issues in this. One is gender. Gender से relate question, religion से relate questions, and caste से relate questions. And the choices are नॉर्मली अभी तक जो चॉइसेस आई हैं वो चॉइसेस हमेशा रही हैं. अगर जेंडर में आया है तो जेंडर से ही दो क्वेश्चंस आ गए, या रिलीजन से आया है तो रिलीजन से ही दोनों क्वेश्चंस आ गए, और इफ इट हैज कम फ्रॉम कास्ट व्हिच हैज बीन वेरी व्हाट आई कैन से रिपीटेड, तो कास्ट से ही दोनों क्वेश्चंस आ गए. दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थरोली. One particular chapter connected to this particular chapter was is omitted in your exam, that is the social differences. Yet जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम सब अलग हैं. वी ऑल आर इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स का मतलब है हम सब ही एक अलग यूनिक है. इवन विद इन एक फैमिली के अंदर टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, और two people cannot be alike. For example, in a family of four, maybe one person likes, say, one vegetable, तो दूसरे को दूसरा पसंद होगा. So this differences are there, but there are some differences which God has created, and there are some differences which we have created. The one which is God created cannot be said like you are born into, say, you are born in this particular state, you are born in particular country, वो हम कुछ नहीं कर सकते. To the family हम कुछ नहीं कर सकते. But there are some differences which we have created, that is the differences based on gender, religion, and caste. This we have, this God has not given us. जेंडर ने तो चलो जेंडर तो फिर भी है, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमने क्रिएट किया है. So we need to look into the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. मतलब क्या जेंडर में कोई डिफरेंस होने से पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस आती है, and how these differences are tackled in the political background. कैसे हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी कहते हैं व्हेन हमारे किसी भी तरीके का जो डिफरेंस है उसको डेमोक्रेसी जो है वो हैंडल कर पाता है. So let us begin with the gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere but rarely recognized in the study of politics. आपके पेपर का क्वेश्चन आता है कि बॉयज एंड गर्ल्स या मेन एंड विमेन में हम कौन से सोशल डिफरेंसेस रखते हैं. And this division needs to be understood as natural and unchangeable, but however it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. मतलब हमने जेंडर डिवीजन को जो है, दो वो बायोलॉजिकल है लेकिन हमने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया कि ये काम लड़की करेगी, ये काम लड़का करेगा. दैट डे आई टोल्ड यू that when it comes to the what you say washing the clothes or looking after the family or anything, we say कि मैं लड़का हूं, मैं क्यों करूं. Boys and girls are brought up to believe the main responsibility of women is housework and bringing up children. This is one of the very stereotype, and I must say, the most hated one.
दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर. ये आपके पेपर में आता है एंड हेयर इट इज गिवन. इफ यू सी द बॉक्स इट इज गिवन कि व्हाट इज, मतलब ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है. दिस कैन कम एज एमसीक्यूज. A system in which all work inside the home is done by women of the family organized by them through domestic helpers. हमारे यहाँ पर यही होता है कि जो काम लड़कियों का है, रोना तक भी हमने लगा रखा कि भाई लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते. इट्स नथिंग लाइक दैट. Women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, and men do all the work outside the home. It is not that men cannot do household, they simply think it is for women to attend to these things. क्योंकि ये स्टीरियोटाइप इसीलिए है, काफी सालों से ये चीज चल रही थी. पहले क्या होता था, लोग जो है, जो विमेन होती थी, दे यूज टू स्टे एट होम. एट दैट टाइम इट वाज लाइक अ वेरी जायंट फैमिली. वी कांट इवन कॉल इट एज अ जॉइंट फैमिली, वी शुड कॉल इट एज अ जायंट फैमिली. क्योंकि एक फैमिली साथ में नहीं रहती थी. देयर यूज टू बी 4 और 5 फैमिलीज टुगेदर, और उनके बच्चे, उनके पर बच्चे सब रहते थे साथ में. सो काम आपका बढ़ जाता था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द मेन वर इन द फील्ड्स and women used to look after. And it's not like the women only used to look after the house, घर का सारा खर्चा, even these were there. but हम लोगों ने धीरे 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 उन चीजों को क्या कर दिया, we stereotype की women को सिर्फ घर के अंदर रहना चाहिए. That was not the time when education was easily available to girls. When these jobs are paid up, मतलब यही चीजों को जब पैसा दिया जाता है, यही हाउस होल्ड का काम, यही खाना बनाने का काम, यही टेलरिंग का काम लड़के लोग भी करते हैं. The world's best chefs are men. The world's best fashion designers are men. Manish Malhotra. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in the hotels are men. Similarly, it is not that women do not do outside their work. In villages, women fetch water, collect fuel, work in the fields. In urban areas, poor women work as domestic helpers in middle class homes, while middle class work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor. But their work is not valued and does not get recognition. And this is where उसकी वजह से, अब ये जो आने वाला पैराग्राफ है, ये बताता है कि उसकी वजह से what are the problems that women face. The result of this division of work is labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. ये हमारे इंडिया में तो नहीं था खैर, because in India, right from the very beginning, we had adopted universal adult franchise. That is the voting rights for all, irrespective of their gender or anything else. But in many countries, आपने last year हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स. एंड एक्टिव सिटीजन्स वर दो सिटीजन्स जो कि मेन थे या पैसे वाले थे, एंड पैसिव सिटीजन्स में विमेन होती थी. Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. There were agitations in different countries for the extension of voting rights. These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. More radical का मतलब होता है जहां they are very aggressive, aimed at equality and personal and family life, and these are called feminists. Now let me come to this point, which is an exam related question. कि फेमिनिस्ट जो होती है, फेमिनिस्ट जो होता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू मेन विमेन. फेमिनिस्ट मतलब एनीवन हु सपोर्ट्स इक्वालिटी फॉर विमेन. ये आपके पेपर का ही क्वेश्चन है.
फेमिनिस्ट कौन होता है? जो इक्वालिटी चाहता है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, वेदर इट इज करियर, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज पॉलिटिकल फील्ड, द गर्ल्स शुड बी अलाउड. If you talk to many people, I don't know, but if you can talk to many people, they'll say ladki to hai. We celebrate when girls are boys are born. We mourn when girls are born. अभी आगे पढ़ेंगे हम. तो जो लोग कहते हैं लड़का लड़की बराबर है, those who believe कि equality should be there, that is called as feminist movement. और ये आपके बुक में यहाँ पर राइट साइड में कहीं दिया हुआ है, ये रहा. Again, this is an MCQ. This is, if you see, to the perception of ideal woman. टीवी सीरियल के लिए आइडियल वुमेन कौन होती है? जो घर में बैठकर टीवी देख रही है. फॉर द फैशन इंडस्ट्री, हु इज एन आइडियल? जिसकी कमर इतनी सी है, वो आइडियल है. एंड फॉर द सोसाइटी, मतलब कि विमेन कौन है? जो झाड़ू भी लगाती है, पोंछा भी लगाती है, घर का काम भी कर रही है, खाना भी बना रही है, बच्चे की देखभाल भी कर रही है, वो. फॉर द इन लॉस, जो डाउरी लेकर आती है. एंड फॉर द एम्प्लॉइज, इट इज ओनली, ये जो फूल बना रखा है ना, दिस इज शोइंग दैट इट इज ओनली अ फिगर, मतलब शी डजंट नीड टू वर्क. इट मीन्स कोई भी हायर पोस्ट नॉर्मली विमेन को नहीं दिया जाता. इट इज बिलीव कि दे शुड नॉट बी. दे आर ओनली जस्ट लाइक अ डॉल, जस्ट लाइक अ डेकोरेटिव मशीन मटीरियल. दिस इज वॉट वी थिंक. सोचो हमारी सोच कितनी अच्छी है. Political expressions of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. अब हमारे पास हैं, we have scientists, we have doctors, we have engineers, lawyers, managers, college and university teachers. पहले जो नहीं थी, अभी है, but not so much. That day I told you कि one of my students, she's मतलब कि अभी right now, only last Sunday I met, and I was told ki India mechanical engineering, out of 200 only 2 were girls. We don't want the girls should go. I'll tell you one example more. If you know Sudha Murthy, the director, or you can say the owner of Infosys, Narayan Murthy ki wife. Infosys, the very famous company. She is one of the very famous writer. She is one of the very famous engineer, teacher, and till date she is doing that. And I'm very fond of her. मैं उनकी काफी books पढ़ती हूँ, सुधा मूर्ति की. तो उनका अगर आप autobiography पढ़ोगे तो you will learn that when she had completed, because she is very old, मतलब वो तो काफी बड़ी है. तो when she was in her, मतलब जब उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था, तो नेचुरल है कि उस जमाने में दैट इज इन 50s and 60s, इट वाज डिफिकल्ट. लेकिन उनके घर वालों ने उनको पढ़ाया था, तो शी हैड एंटर्ड इनटू सम टाटा इंडस्ट्री. टाटा में काम कर रही थी. तो शी वांटेड टू वर्क वेयर द ऑटोमोबाइल्स आर एक्चुअली मेड, जहां बनती हैं. But she was refused to that post because she is a woman. And then what she did is, उन्होंने क्या किया, she wrote a long letter to Tata. मतलब उन्होंने, उनको उस वक्त में इतना ध्यान नहीं था, उन्होंने गुस्से में एक लंबी सी लेटर लिखी टाटा को, दैट आप जो हो, यू आर वेरी हिपोक्रेटिक. आप वैसे तो यू आर ओपनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लेकिन आप अपने यहाँ पर लड़कियों को काम नहीं करने देते हो. देन टाटा कॉल्ड हर एंड उनसे पूछा व्हाट वाज द प्रॉब्लम. तो शी टोल्ड दैट आई वॉन्ट टू वर्क इन द वर्कशॉप. जहां पर, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो वर्कशॉप में काम करना बुरा नहीं है, बट वहां लेबर्स वगैरह होते हैं. तो शी सेड आई एम कंफर्टेबल, एंड शी वाज अलाउड. सो दिस इज, वी मेक इट. ठीक है, कई जगहों पर इट इज अनसेफ. आई डोंट से दैट इट इज सेफ, बट वी नीड टू कम आउट ऑल्सो. इन ये पेपर का आपका क्वेश्चन है बच्चा, जो ये वाला आता है, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस हैज कम इन द एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल इन सम स्कैंडिनेवियन, ये आपके पेपर में आया था कि कहाँ पर द विमेन पार्टिसिपेशन इज हाई, मतलब आपके उसमें ऑप्शंस में आया था. एंड इट इज द स्कैंडिनेवियन
countries like Sweden, Norway, Finland, यहाँ women जो है उनका participation. Even if you go to Thailand and all, you will find the women working openly. In fact, as a as an Indian, I'm very proud to say that in our South also, it is very common for the women to work. हमारे यहाँ पर it is always equal. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ये लड़कियों का काम है लड़कों का काम है ऐसा नहीं है इन माय फैमिली आल्सो ऑल माय कजिन्स उनकी वाइफ सब if they all are engineers though they are working or non-working they are looking after the family or they are having their own institute or anything they are like that. And in fact, if you go to Chennai, I don't know about other parts, but I have gone to Chennai. तो वहां पर तो ड्राइवर से लेके कंडक्टर से लेके ऑल द women who are मतलब इन दी होटल्स ऑल्सो आपके जो वेटर्स होते हैं या वेटर्स जो होती हैं वो पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भरते हैं यू कैन फाइंड बट इन ओवरऑल यू कैन नॉट फाइंड इट. In our country women still lag much behind. ये आपके पेपर का 5 marker question है which came in the paper जो पेपर में आया था. Ours is a still male dominated patriarchal society. बेटा patriarchal का मतलब होता है patriarchal मतलब father, matriarchal मतलब mother. यानी कि जहां पर the male member फादर हस्बैंड या फिर ब्रदर जो लड़का होता है उसको जो है हम मतलब कि घर का मुखिया मानते हैं. इट्स अ एमसीक्यू क्वेश्चन. Literally ruled by father, his concept is used to refer to a system that values men more and give them power over women. This is patriarchal. And matriarchal होता है जहां पे opposite the women are given. So how the women face disadvantage, discrimination and oppression. आपकी जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही आया था ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था. Women still face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. और आपको ये जो नीचे लिखे पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं. The literacy rate among women is 54% as compared with 76 among men. मतलब अगर हम 100 लोगों का सर्वे करते हैं तो उनमें से 56 औरतें शायद पढ़ी लिखी होंगी बट अगर हम बॉयज का लेते हैं तो 76. In fact, that day I told you, I shared with you कि 10th में normally girls always top. This is a record. But when it comes to the higher education, parents say कि no, you should not go for this. Similarly, a smaller proportion of girls students go for higher studies. ये जो मैंने आपको बताया. When we look at the school results, girls perform as well as boys, if not better in some places, as I see. If you see the CBSE results, you will find it out. But they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. That day I gave you the example of one of my students also. No wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. Similarly, आपके जो high post होते हैं अगर आप उनमें देखो तो we don't have women. In fact, we have a stereotype कि women अगर आई है तो she must have come only with buttering, not with her talent. On an average, an Indian woman works 1 hour more than average man every day. इट इज वेरी फॉर्मल. आप सुबह से लेकर देखो घर का काम करना घर के सारे चीजें देखना अगर आप टोटल देखो दैट नंबर ऑफ आवर्स अ वुमन स्पेंड्स इज मोर देन. लेकिन जब बात आती है आराम करने की जब बात आती है पावर की तो हम कहते हैं नो 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 मेल इज मोर इम्पोर्टेंट. Yet much of our work is not paid and therefore offer not valued. There are so many on the instas you can find many of the reels on this कि women है क्या करती है घर पे ही तो रहती है. Just put those hours into the wages and then find out. There is one very famous chapter in our 11th standard also, Mother's Day करके हमारा एक बहुत अच्छा chapter है. In that also you can see a woman doesn't have any holiday, a man has.
A woman doesn't have 24/7 into 365. She has to work. And she's the one who has to always say that, yes, you have to compromise. बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे की देखभाल करना वुमेन की देखभाल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन इन द फैमिली. कोई सामने से गलत बोलेगा तो वी वुड से आवर गर्ल्स टू स्टॉप. वी वुड नॉट से द बॉयज टू स्टॉप. दिस इज हाउ वी डिस्क्रिमिनेट. थर्ड, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976. ये ईयर आपको आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है. Provides that equal wages should be paid to equal work, but almost all areas. Tell me how many of us know the current scenario of T20 of women. कितने स्पॉन्सर्स हैं जो विमेन के क्रिकेट को या विमेन के किसी भी मतलब की इवेंट को दे स्पॉन्सर, अदर देन द ब्यूटी पेजेंट. We are more fond of Virat Kohli or Dhoni. We don't know about anybody. हाँ, अगर अभी मैं कहूँ if you what you know about the beauty pageant, तो हर एक इंसान मनुषी चिल्लर से लेकर लारा दत्ता सबके बारे में बता देगा. But we don't know. Sports में when it comes, the men get in crores, the women get in hundreds. Even in movie industries, that day I told you, only there are two. One is Karina, second is Deepika. They are the one who get Alia. They are the one who get equal to their counterparts. But normally, और बाकियों का नहीं होता. To factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. This is one of the curse I can say, and it is very common. And this is called as female infanticide. And it's very, very common that men, they do it. And we live in that society. Such selective abortion led to a decline in the child sex ratio. Number of girls per thousand in the country is merely 9. यानी कि अगर 1000 boys हैं तो girls हमारे 919 है. The reason? We don't want girls. क्योंकि हमारे दिमाग में हमने एक चीज बना रखी है कि भाई लड़की पैदा होगी तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको डाउरी देना पड़ेगा. We don't teach our boys that there is no need of dowry if a girl is educated and she can be equal. We want an elaborate marriage. We want everything elaborate. We want to spend crores of rupees, but we don't want to change our mindset. As the map shows, this ratio has fallen below 850 or even 800 in some places. अब आप इस मैप को देखोगे तो आप देखोगे ये जो रेड कलर है यानी कि आपका हरियाणा या फिर आपके जो दिल्ली वाला जो एरिया, वहां पर लड़कों से लड़कियों का जो रेशियो वो 800 है. दोज विच इज 800, सॉरी 800 to 849 ऑरेंजिश में है. येलोइश कलर राजस्थान आपका, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. Then you can see very less in Tamil Nadu. Then some of the portions यहाँ पर आपके जो है 850 and 950 and above आपका, if you see, it is in Andhra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, then all the northeast. This is how we are taking. This may come as a question. That is why I have used this. There are reports of, ये अलग सा question है, separate questions है, which has come in option to that question. जो ऊपर हमने अभी question किया था कि how are women discriminated, यानी कि उनको इक्वल पे नहीं दिया जाता, उनके काम को हम इक्वल जो मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनके एजुकेशन पर हम ध्यान नहीं देते हैं. These are the way. Now is there are reports of various kinds of harassment, exploitation, and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. You know that. It's very common to hear about a rape or a murder. And then there is domestic violence, beating, harassment. This is how women हमारे country के अंदर still they are discriminated.
नाउ लेट अस मूव टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. वो तो हमारा था सोशल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सोसाइटी में हम विमेन के लिए कितनी इज्जत रखते हैं. ऑल दिस इज वेल नो. इवन हमारा एक आपका जो एक चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया इन हिस्ट्री, इवन इन दैट ऑल्सो यू विल बी studying that even Mahatma Gandhi and people at that time, they believed that women should only be confined to hearth. Hearth matlab angithi. They should not be there in the political era. Yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led to many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control powers, their problems will not get adequate attention. यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें जो है लड़कियों का जो रिप्रेजेंटेशन है, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसे बढ़ाना है. Unless and until they are not empowered. आपको पता है in India, I think the 11th 5-year plan जो हमारा है, that focuses on only women empowerment. उन दिनों में बड़े सारे women से related बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका काफी मजाक भी बनता है कि बेटा जाकर धनिया पुदीना लाओ, बट ऐसे आपके मतलब कि women equal representation, equal मतलब कि उनका वो there were many events also किया गया था. In India, the proportion of women in legislature मतलब आपका लोकसभा राज्यसभा has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 12% of its total strength for the first time in 2014. मतलब 12% of the total people. यानी अगर हम 550 का अगर हम स्ट्रेंथ रखते हैं तो ओनली 60 आर women, the rest are men. एंड अगर हम स्टेट असेंबलीज बोलते हैं यानी कि अपने अपने स्टेट्स में, तो वहां ओनली 5%. In this respect, India is among the bottom groups of nations in the world. India is behind. आप देख सकते हो, ये आपका है. दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. अगर आप देखो नॉर्डिक कंट्रीज में 42.3% विमेन जो है दे पार्टिसिपेट. अमेरिकाज वगैरह में 29.5. Europe again 26.4. Then in sub-Saharan, then Asia, Arabian states, Pacific, and then India comes around 11.8. And this is a recent figure. This is a recent figure. यानी कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें हम सबसे नीचे हैं. In the government, cabinets are largely all male, even when a woman becomes a chief minister or prime minister. उस दिन आपको मैंने बताया था, even if any किसी स्टेट के अगर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, अगर किसी के स्टेट चीफ मिनिस्टर जो है, उनके नीचे काम करने वाली कितनी औरतें होती हैं. Indira Gandhi is said to be one of the iron women of India. But how many people, how many women were there in her cabinet? It's not there. She came because she belonged to the Nehru family, Nehru dynasty, so she came. But how many are actually representing? Yes, right now we have a good strength, but still it is not equal strength. We have a good strength, but not equal strength. Yes, Sushma Swaraj was there. Pratibha Patil was there. Right now, हमारी जो president है, she is a woman. Then आपकी निर्मला सीतारामन जो है, she is there. Yes, we have prominent people, but ये तो गिन के हुए ना. Less बाकी in states, how many women are there? In our Lok Sabha, sorry, in our थर्ड टायर, दैट इज आपका सबसे नीचे, दैट इज लोकल गवर्नमेंट. वहां आपके अगर सरपंच वगैरह होते हैं, वहां विमेन होती हैं, बट नॉट एट द अदर लेवल. वन वे to solve this problem is to make it
legally binding to have proportion of women in the elected. This is what Panchayati Raj has done, जो मैं भी आपको बता रही हूँ. 1/3 of the seats in local government is reserved for women. So around 10 lakh elected women representatives are there, but they are only there in the municipal, or you can say only in the panchayat, not in the mainstreams, not in the industries, not in other areas. Women organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of the seats in Lok Sabha and State Assembly. A bill with this proposal has been pending for more than a decade. There is no consensus. Consensus मतलब कोई एक मत नहीं है, कोई नहीं मानना चाहता है, and the bill has not been passed. इसलिए so gender division is an example that forms some of social division needs to be expressed, and this also shows that how disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue. Do you think women could have made gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? ये आपका विमेन रिजर्वेशन बिल का जो कार्टून है. You know that you will be having the cartoon, and what this cartoon is selling is कि सब लोगों ने मतलब कि सब एक एक करके सबने रखा हुआ, but they have stopped. इन लोगों ने रास्ता रोक रखा है. You can see. They don't want to pass the bill. We will find a way for you. ये सब इनके कोरे promises है, but they don't want to. Everyone has stopped. The people do not want. And a country's democratic politics is said to be successful only when you are able to give equality. Equality does not mean only the voting rights, it is also removing the discrimination that they often face. ये अभी तक जो हमने पढ़ा है ये है जेंडर डिविजन. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दिस इज अबाउट रिलीजन, communalism and politics. One of the most sensitive topic, because when I take this topic I need to tell that we should, as a teacher, as a student, we should not politicize any religion. We are only God made, we don't know what happens. ये आपका जो है, let us now turn to a very, अब ऊपर वाले में से बच्चे you can expect two questions. How are, मतलब जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हो गया, पेट्रियार्चल सिस्टम हो गया, या फिर आपका विमेन रिजर्वेशन बिल हो गया, देन विच कंट्रीज के अंदर विमेन हैव मोर पार्टिसिपेशन, दीज ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चंस. बट इफ इट कम्स टू द 3 मार्कर और 5 मार्कर, तो विमेन आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड. ये वाला जो क्वेश्चन है दैट कैन कम इन योर एग्जाम. Now let us go to the second portion, that is politics and religion. Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences. This division is not universal as gender. ये हमने बनाया है. We never know when how it happened, but ये हमने बनाया है. Many countries, including India, have in their population followers of different religions. Now, ये नॉर्थ आयरलैंड वाला आपके यहाँ पर यहाँ नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू बिकॉज इट इज गिवन हियर. आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज इन द चैप्टर विच इज डिलीटेड. नॉर्थ आयरलैंड के अंदर क्या हुआ था, ये आप लोगों ने उस वाले में चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इफ यू लुक इनटू द मैप ऑफ यूरोप, तो आपका जो आयरलैंड है, मतलब ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, and Ireland is a small island on the left side. Now in Ireland, what has there is there are two kinds of people. One is the Roman Catholics who believe in the old system, old regime, Roman Catholics, and the second one is the Protestants who are modern जिनको बोला. Now the modern Protestants were rich. तो वो लोग चाहते थे कि आयरलैंड शुड बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम.
Whereas जो रोमन कैथोलिक्स थे, जो कि आयरलैंड के ओरिजिनल्स थे, दे वांटेड कि इट शुड बी अ सेपरेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट उनके पास पावर नहीं था। अल्टीमेटली वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, विच व्हाट हैपेंड इज कि आयरलैंड नाउ इज पार्ट ऑफ यूके। ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पर रिलीजन की वजह से डिफरेंसेस आई हैं, कंट्री का पार्टीशन हुआ है। As we noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, now Christianity is same, only there is some division. Like in Muslim also you have Shia Muslim and Sunni Muslim. Religious differences can be serious about the way people practice that religion. Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. मतलब हम लोग जेंडर को नहीं लेते हैं, लेकिन रिलीजन को हम ऑफन लेते हैं। मतलब इफ यू लुक इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री, यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं रिलीजन हैज बीन वन इम्पॉर्टेंट इवेंट। अभी तो आपके मतलब कि हिस्ट्री के अंदर भी आई थिंक 90% सिलेबस इज डिलीटेड। आई हैव बिकॉज आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, इसलिए मुझे पता है देयर वर सो मेनी चैप्टर्स जिसके अंदर हम लोगों ने वियतनाम के बारे में, चाइना के बारे में पढ़ा है, जहां रिलीजन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। This is an MCQ. Gandhiji used to say that religion can never be separated. What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam. उनका रिलीजन से मतलब हिंदू या मुस्लिम नहीं, बट द मॉरल वैल्यूज, उसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते किसी रिलीजन से। एंड ऑल द religion gives the same moral values, all of them give the same ethics. He believed politics must be guided by ethics drawn by religion. Human rights groups in our country have argued most of the victims of communal riots. You take the data and you will find that people from one particular religious minorities have always been targeted. We have seen, we have witnessed, I can say, there have been many. They have demanded government take special steps to protect religious minorities. नाउ हुआ रिलीजियस माइनॉरिटीज, अगर किसी एरिया के अंदर, किसी कंट्री के अंदर अगर हम 100 जने लेते हैं और अगर हम उनके रिलीजन को डिवाइड करते हैं कि दे बिलोंग टू ए, दे बिलोंग टू बी, दे बिलोंग टू सी, जो सबसे कम एक पर्टिकुलर रिलीजन के होते हैं उनको हम माइनॉरिटीज में लेकर आते हैं। माइनॉरिटीज डजंट मीन टू एनी स्टेटस ऑफ superior or inferior, it is the number of people among the population. Women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women, जो हम ऊपर already पढ़ चुके हैं। So they have demanded government should change these laws to make them more equitable. In India, there was a change. I think the evoke of that triple talaq law, that was one of the steps regarding this only, क्योंकि उसके अंदर the power is not given to women, the power is equal, लेकिन अगर एक मतलब there are certain, when we study that, we come to know that it is entirely wrong. All these instances involve a relation between religion and politics, क्योंकि religion ऐसा कहता है तो हम उनको जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हमने मतलब कि, और पॉलिटिक्स में इट इज वेरी नेसेसरी कि हम उनके हर छोटे छोटे मुद्दों को, उन इश्यूज को उठाएं। if there is any discrimination, if they feel ki a particular minority is targeted, then we must understand. Once, let me complete it and then I'll tell you one example. But they do not seem very wrong or dangerous. Ideals, and values drawn from different religions can perhaps should play a role in politics. People should be able to express in politics their need, interest, and demands as a member of a religious community.
Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. हमारे यहाँ पर उस चीज को किया गया है. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. जैसे हम लोगों ने we had read about this Sri Lanka. Most of the most of the laws or most of the acts that government did was to particularly foster one religion. That should not be there. आप अपने रिलीजन को प्रमोट करते हो कभी गलत नहीं है, बट यू शुड नॉट डिमीन अनदर रिलीजन. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिक्स. और एल्स व्हाट विल हैपन, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिमीन करेंगे तो थोड़े दिन बाद वो लोग लड़ने के लिए हमारे सामने आ जाएंगे. दैट विल ओनली लीड टू रायट, दैट वुड ओनली लीड टू कम्युनल वायलेंस, नथिंग वुड हैपन. द प्रॉब्लम बिगिंस नाउ. हु इज अ कम्युनलिज्म? आपके पेपर का क्वेश्चन होता है हु इज अ कम्युनलिस्ट. अ कम्युनिस्ट होता है जो अपनी रिलीजन को सुपीरियर और दूसरे रिलीजन को कम समझता है. एंड देयर आर कम्युनल पॉलिटिक्स एवरीवेयर. Certain times it may be belonging to religion, sometimes it may be belonging to a community. The problem begins when religion is seen as the basis of nation. The example of Northern Ireland shows the dangers of such an approach to nationalism. The problem becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan. Partisan मतलब partiality करना. When one religion and its followers are pitted against another. यानी कि एक रिलीजन को हम ज्यादा महत्व देते हैं. In a country we cannot, like for example, if a mother is there and if she is having 4 children, she cannot claim that which child is better for her. Similarly, in a religion, if in a country democratic है तो you cannot pit one religion against another. Democracy का मतलब ही equality होता है. हाँ, in another forms of government it is possible, but it is not possible in democracy. This happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, and when the demands of one religious groups are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over rest. इसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म. यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. दिस मैनर of using religion in politics is called as communal politics. This is a 1 marker, and sometimes it has even come, you can also expect in 2 marker. I'm repeating again. Communal politics क्या होता है? When हम religion को अपना बेस बनाते हैं, हम देश का जो बंटवारा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन करते हैं. वन रिलीजन इज गिवन सुपीरियोरिटी एंड अनदर वन इज गिवन inferiority complex. Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. Social community सिर्फ हमारा religion से नहीं है ना. There are so many things. Communalism involves thinking along the following lines. The followers of a particular religion must belong to one community. जैसे हिंदू के अंदर ही as we say that Brahmins. Then even in the Muslims also we have Sunni, Shia. In Christians also Protestants, Roman, Catholics. These fundamental interests are same. Their fundamental interests are same. Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. It also follows that people who follow different religions cannot belong to the same social community. If the followers of different religion have some commonality, they are superficial and immaterial. भाई अलग अलग रिलीजन के हैं लेकिन हमारी सोच तो एक जैसी हो सकती है ना. Their interests are bound to be different and involve a conflict. In its extreme form, communalism leads to belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation.
जिसको हम मेजोरिटेरियनिज्म भी बोल सकते हैं, यानी कि द मेजोरिटी जिस रिलीजन को बिलोंग कर रहा है उनके लिए मोस्ट ऑफ, मतलब कि वी शुड गिव मोर पावर. Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nations. That is the fundamental principles that how India was divided into two uh, um, hissa, that is India and Pakistan, when communalism was taken as a form of politics. This belief is fundamentally flawed. मतलब ये गलत है. Flawed मतलब this is wrong. People of one religion do not have the same interests and aspirations in every context. You take anybody, two people in the same family belonging to so-called what we call as Brahmin or Vaishya or Kshatriya, they will not have the same kind. Everyone has several other roles, positions, and identities. There are many voices inside every community. All these voices have the right to be heard. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other religion is bound to suppress many voices within the community. हो भी सकता है कि हमारे, मतलब कि आई एम बिलोंगिंग टू ए रिलीजन, अनदर वन इज बिलोंगिंग टू बी, मे बी उसमें भी मेरे सपोर्टर्स हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो दूसरे रिलीजन का तो वहां के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है. ऐसा होना नहीं चाहिए इनफैक्ट. Now, this is the one which is, I can say, a repeated question of both. Communalism can take various forms in politics. मतलब अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, मतलब how do the politicians use religion? The most common expression of communalism is in everyday belief. These involves religious prejudice, stereotypes of religious communities, belief in the superiority of one religion to other. ये काफी कॉमन है. A communal mind often leads to a quest for political dominance of one own religious community. अगर पॉलिटिशियन जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता तो दे वुड ट्राई टू सप्रेस द अदर्स. For those belonging to major community, this forms majoritarian dominance. For those belonging to minority, it can take the form of desire to form a separate political unit. Even in our country also, we have different political units. Political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism, जिसमें वो लोग symbols को, religious leaders को emotional appeal करते हैं, as we had read in the chapter rise of Nazism in Hitler जो हमने पढ़ा था. उसके अंदर उन्होंने red flag, swastika, they tried to appeal and playing fear in order to bring followers of one religion together in the political arena. In the electoral politics, this often involves special appeal to the interest or emotions of voters of one religion and prefers to others. उन्हें पता है कि ये वोट उनको मिल जाएगा. We should not, as a teacher, I should not name the religion. मैं religion का नाम नहीं ले सकती हूँ. But that is what we do. Sometimes communalism takes, ये पेपर के अंदर अलग से क्वेश्चन आया था, and this you can expect for 2 marks, has taken the form of communal violence, riots and massacre. The India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of partition. The post-independent period also has seen large-scale communal violence. The last for today. इंडिया के अंदर ऐसा क्या सिस्टम किया है जिससे वी हैव, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मतलब कि कम्युनलिज्म टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स में, ये आपके ऑप्शन में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्या बनाया है जिससे कि सारे रिलीजन को प्रोटेक्शन मिलता है. तो वेरी फर्स्ट इज there is no official religion for the Indian states.
लाइक श्रीलंका का बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड या किसी और आप मतलब कि यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो दे हैव क्रिश्चियनिटी. हमारे यहाँ किसी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाता. द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 4 पॉइंट्स है, दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स, क्लास 10. The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice, propagate and any religion or not to follow. आपकी मर्जी. But it also prohibits any discrimination. मतलब आप किसी को on the grounds of religion prohibit नहीं कर सकते हो. किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या पॉलिटिकल फील्ड के अंदर एंट्री के लिए there should be no discrimination. But at the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matters of religion to ensure equality within religious communities. For example, it bans untouchability. Then there are some, मतलब कि कुछ आपके सेंट स्टीफन्स जो कॉलेज है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को कॉलेज है. जीसस एंड मैरी आपका जो कॉलेज है अंडर DU, इट्स उसी तरीके से देर आर क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स आल्सो. प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है आपका, देन यहाँ पर आपके मयूर विहार में है. सो दीज आर, बट वो क्यों प्रोवाइड किए गए हैं? दैट्स ओनली बिकॉज देयर इज इक्वालिटी. उनको इसीलिए प्रोविजन दिया गया कि वो अपने स्टेटस को एजुकेशनल वाइज इंप्रूव करें. And that is what we say India is a secular state. Understood in this sense, secularism is not an ideology of some party or persons. It means it is a foundation. Communalism should not be seen as a threat to some people. It threatens the very idea of India. That is why communalism needs to be combated. Combated matlab we need to tackle that situation. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient, because इसने हम लोगों को prohibition तो दिया है but how to deal नहीं दिया है. Communal prejudice and propaganda needs to be countered in everyday life, and religion based mobilization needs to be countered in arena of politics. मतलब अभी भी हमें इस एरिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ सकती है उनको टैकल करना आना चाहिए. So this is how, if we take any community, see, कभी भी कोई भी political party आई है, if you count the votes, it is not from one particular religion, it is always from everyone. So when it is from everyone, then why we have to discriminate people? Discrimination so better है कि आप अलग कर दो. And when it is not done, then it may lead to communal violence, riots, or maybe a civil war within the country, which is not good for democracy. So this is what we will be doing today. The rest, that is caste and politics, is one more again a different. उसमें से भी आपके 2 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं. इनमें से ये दोनों क्वेश्चंस आपके चॉइस में आएंगे. उनमें से 2 क्वेश्चंस आपके जो है पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स आपके, एंड मतलब हाउ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपका जो क्वेश्चन है, that would be coming, that we would be taking in the next session.